गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. तुम लोग क्या लगे नहीं रहे पेपर डिस्कस करने आप पिकनिक बनाने आए. पेपर देख लिए, देखो सबके पास आ गया होगा, सॉफ्ट कॉपी आ गया. ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन करके इसमें डिस्कस करते जाएंगे. इसमें हम तुम्हें बताते भी जाएंगे कहाँ कहाँ हम क्या बताए थे. ठीक है, तुम लोग लेक्चर रिकॉल करना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ क्या चीज़ें हिट कर रही हैं, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा गोपालपुरा. पहले इसमें है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी. पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी डिबेट इज स्टिल अलाइव. कमेंट. वुड्रो विल्सन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, intellectual contribution, the study of administration, the revolutionary essay which was authored by Woodrow Wilson. उसमें तुमने देखा था, उसमें 3-4 जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उन्होंने फोकस किया था. पहला था व्हाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट, फिर एक था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी, ठीक है, फिर था पब्लिक सर्विसेज ट्रेनिंग, कॉम्पिटिटिव मेथड एंड स्टडी, डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब था. उसमें पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी हम लोग डिस्कस किए थे. पॉलिटिकल क्वेश्चंस आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस. पॉलिटिक्स इज द वर्ल्ड ऑफ हरी एंड स्ट्राइफ, वेयरएज एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक बिजनेस. उसमें डिस्कशन चल रहा था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेलिवेंट मतलब इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, उसमें लगभग थर्ड स्टेज में पीपल स्टार्टेड, स्कॉलर्स स्टार्टेड चैलेंजिंग पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी, दिस डॉक्ट्रिन दैट इट इज नॉट सो मच रेलिवेंट. तो हम लोग डिस्कस पे किए थे कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी, if this doctrine is taken in a very rigid sense, in literal sense, then you can say okay fine, politics and administration they are different from one another. The doctrine of dichotomy is not so much relevant. हम लोग दोनों तरह से डिस्कस किए थे कि वुड्रो विल्सन, some scholars interpreted वुड्रो विल्सन as saying that politics is different from administration, and if you want to achieve efficiency in administration, it must be kept away from politics, because politics is the world of hurry and strife and administration is very much like business. तो उसमें क्या था कि थर्ड स्टेज कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में तुमने देखा था कई स्कॉलर्स ऐसे हैं जो वुड्रो विल्सन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिक्स एंड डायकॉटमी इज नॉट सो मच रेलिवेंट, ठीक है, और इट इज आउटडेटेड, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दैट गवर्नेंस इज ऑल अबाउट इंटरप्ले ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. So political and administrative actions are interdependent, interrelated. It is difficult to think of administration without politics. So whether it is policy making or policy implementation, in all these areas you find political leadership, administrative leadership working together. To say political questions are not administrative questions are not political questions, it conveys the message that administration has to deal with administrative question and political leadership has to deal with political questions, value centric questions, something. But in reality, even political questions are taken care of by administration. Administrative questions are matter of concern for the political leadership. अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ढंग से अगर नहीं करता है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने जोन में अगर किसी क्वेश्चन को ढंग से एड्रेस अगर नहीं करता है, इट विल हैव इम्प्लीकेशंस नॉट ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इट विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल. क्यों कि पॉपुलर परसेप्शन ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप डिपेंड्स हेवली ऑन व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हैज बीन मेटेड आउट बाय एडमिनिस्ट्रेशन टू सोसाइटी. ठीक है, तो उस वक्त उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, पॉलिटिक्स एंड डायकॉटमी जो है इट इज नॉट सो मच रेलिवेंट, दोनों मिलकर काम करते हैं. दूसरा एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स था, उसने ये कहा था, कुछ एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स उनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन जो है इतने एक्सपीरियंस थे, स्टेट्समैन टाइप वुड्रो विल्सन लाइक स्टेट्समैन, उनसे ये मिस्टेक नहीं हो सकती थी. उन्होंने जब कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो डायकॉटमी का जो डॉक्ट्रिन उन्होंने दिया, उसका मतलब ये नहीं था कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू वर्क इन टू watertight compartments. He simply tried to identify distinct features of politics and administration, and he wanted to say that he was not against the cooperation between the two. It is highly improbable that a person like Woodrow Wilson, who later on became the president of America, a person having such a profound deep exposure to politics, administration, dynamics of governance, could have commented like this. So he would have simply emphasized that administration has some distinct qualities. It is the zone of technically very technical officials who are well versed in dealing with the things like planning, organizing, directing, controlling. उनके काम में अगर बहुत ज़्यादा political interference अगर हुआ तो उनकी एफिशिएंसी पर असर होगा. ही वॉज नॉट अगेंस्ट कोऑपरेशन, बट एक्चुअली ही वॉज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट दे हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, एज लॉन्ग एज दे वर्क इन कोऑपरेशन विद वन अनदर, गेटिंग अ पॉइंट, रिस्पेक्टिंग द डोमेन ऑफ ईच अदर. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ इंटरवेंशन टेक्स प्लेस, नॉट कोऑपरेशन,
undue, undesirable intervention takes place when administrative questions, fact-centric questions are being addressed by those who try to deal with the things on the basis of value-centric conception, then there will be a problem. Point is clear? And Woodrow Wilson, that's one. And then we said that even though it has been criticized by many scholars much earlier, in fact by 70s, 80s, many scholars started public choice approach or new public management, all of them rejected doctrine of politics and dichotomy. But that debate is still alive because time and again we come across many situations where we realize that yes, Woodrow Wilson was very much correct. We could not understand Woodrow Wilson in spirit when he was saying that politics and administration are different. Take up the example of RGकर हॉस्पिटल, कलकत्ता में जो हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता लेकिन पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन द जोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो आरजीकर का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो या फिर चेन्नई में हो, किसी भी जगह पे, तमिलनाडु में हो, किसी स्टेट में, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस है, महाराष्ट्र में हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉमन लीगल कोड के अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर होता है तब हम लोग के समझ में आता है कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया. जैसे एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कलकत्ता का एग्जाम्पल अगर ले लो कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के काम में अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर नहीं होता तो ऐसी दुर्गति नहीं होती. पुलिस आती, वो अपना काम करती, एफआईआर जो दर्ज करना करती, वो अननेचुरल डेथ नहीं बताती. पुलिस का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, कॉमन लीगल कोड है, वो उसको कंफर्म करती. लेकिन सारा घालमेल क्यों हुआ है कि उसके बीच में पॉलिटिकल लीडरशिप आ गई. कोलकाता पुलिस कमिश्नर को इंट्रोगेट करने के लिए सीबीआई आती है या फॉर क्विजिंग और व्हाट यू से उसके लिए आती है, और पता चला कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जो है वो धरना प्रदर्शन में बैठ जाती है कि नहीं, हमारे पुलिस कमिश्नर को कैसे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको अपना करने दीजिए. सुशांत सिंह केस में तुम देखोगे पटना पुलिस जो है उसके ऑफिसर्स एक डेलीगेशन इधर आया है महाराष्ट्र, मुंबई में आया, उसको मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ के डाल दिया कोरोना सेंटर पे. ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको पॉलिटिकल लीडरशिप डायरेक्शन देती है, तुम्हें ऐसा करना है. ठीक है, और दोनों के बीच में एक अलायंस है. सो दे आर, इट हैज बिकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इट हैज ऑलमोस्ट बिकम ए नॉर्म that administration conforms more to the direction issued by the political leadership, caring a damn about the common legal code and administrative ethics. ठीक है, they have to conform to the direction given by the political masters, and in the course of doing so, if they if they succeed in ensuring consistency with common legal code, nothing like it. Otherwise, their first priority is to comply with the direction of political leadership, which is dangerous. So therefore, politics administration dichotomy concept समझ रहे हो तुम लोग? डिबेट इज स्टिल अलाइव. इतने आसानी से नहीं कह सकते कि दिस डॉक्ट्रिन हैज बिकम ऑब्सोलीट, इट हैज बिकम इररिलेवेंट. ठीक है, डॉक्ट्रिन इज नॉट इररिलेवेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड डॉक्ट्रिन इन राइट अर्नेस्ट एंड स्पिरिट. समझे कंक्लूजन क्या निकला? कि वुड्रो विल्सन propounded this doctrine and he tried to identify the distinct identity of political leadership and administrative leadership. Political questions are not administrative questions, although it was criticized by many scholars that it is very much impractical, in reality it does not happen. But actually Woodrow Wilson was trying to convey the message that they have a distinct entity of their own, they need to work together, but there should not be undue, undesirable interference in the domain of each other. Otherwise, administrative efficiency and professionalism will be seriously compromised, and that will be a dangerous thing. Not if don't see you don't see such things anywhere in the world, then in India you can see tens of instances. At least if you take an example from India, then Woodrow Wilson's doctrine still hold good. Point clear? एकदम सिंपल. ये डिस्कस हम लोग कर चुके थे. उसके बाद तुम्हारे है formal organizations are made up of informal groups. Discuss formal organization. When we talk about formal organization is a composite expression of man, money, machine, material, to facilitate accomplishment of some goals, purpose and objectives on a sustained basis. We have discussed that organization definition, organization. When we talk about formal organization, we talk about organization, that communication, that activities, the discharging of responsibilities, exercise of authority, all such things are taking place within the bounds of predetermined rules, regulations, policies, protocols, getting out formal organization. And when we talk about informal organization, we refer to that component of that composite expression, that interaction among the members of organization, interaction or communication that takes place beyond the purview of rules, regulation and formal policies. ठीक है, that interaction which takes place because of very natural social instinct or gregarious instinct among the members of organization. So organization comes into existence
All of a sudden, no organization comes into existence because of formal relationship. Organization begins with an informal basis, and in the course of time, it gets institutionalized. So formal organization, we talk about the organization where things are controlled and regulated by some predetermined rules, regulations, policies. That organization in the core has informal grouping only. In fact, an organization is nothing but a society institutionalized in furtherance of some purpose and goal. Point clear? Or there's another way to look at the thing. When we talk about organization, when we talk about administration, that begins with human beings. Organizations come into existence because of human beings. Organizations are run by human beings. Organizations are brought to end by one or other actions of human beings. So the core content of any organization is human behavior. Two or more persons, they cooperate with one another. Are getting a point? Two or more persons, they interact with one another, they cooperate with one another towards the accomplishment of a common objective. So first of all, cooperation takes place. Organization comes into existence with the spirit of cooperation. Two or more persons, founder members, they begin that this is the goal or purpose, we can accomplish such as things. Okay, and then they unite, they plan out the things, they organize things. So first interaction that takes place is largely informal interaction. And then they come up with their common legal code, rules, regulations, policies, so that thereafter things are guided and controlled as per the norms. So organizations begin their journey with informal association. Getting a point? In the course of time, it gets institutionalized, it becomes formal. And if in every formal organization, you have informal organization. And every informal organization has some kind of formal aspect to it. Point clear? So formal organizations that we see, the composite expression of well organized interplay of man, money, machine, material, all such things, so as to facilitate a conducive environment for the accomplishment of objective. All such things begin with informal groups. The core content of the organization is human being. They interact with one another. They are human beings. They are not mechanical beings. Point clear? They have economic needs as well as social needs. They are economic being as well as social being. Point clear? They have social needs, and that's why they become easily dependent on one another emotionally. They share their feelings, their emotions with one another. Relationship comes into existence. Formal organization is an effort to ensure that interrelationship among the members of the organization are steered by application of some rules and regulation in a formal way, so as to derive some goal, purpose, and accomplish some goal, purpose, and objective. Otherwise, things will go in different direction. So it begins with informal groups, informal interaction. Then it is institutionalized, it is disciplined, it is regulated to some extent. Getting a point? To accomplish certain goal, purpose, and objective. So all formal organizations are made up of informal groups. Okay? It appears that there is a formal organization, a corporate entity, a company, but in that you will find different groups and different communities. Point clear? They have their own community-centric interest. So within the organization, you can see many societies and communities. Point clear? They interact with one another, and all such interactions do not take place within the bounds of rules and policy of the organization. They decide the protocol. They become emotionally dependent on one another. They develop relationship. Because of their natural social, the social needs or their gregarious instinct, they interact with one another. And gradually in the course of time, things become more and more formal. So at any point of time in any organization, however formal it may be, you cannot say there is no informal grouping inside it. It is impossible to think of that. Yes, if you come up with an organization with AIs only, then you can say that organization is only a formal organization. There is no informal grouping. But that AI based organization too will come into existence because of intervention of human beings. AI cannot form an organization of AI. So it has to be established by some human beings group or two or more persons. So some informal interaction will certainly take place, and then things get systematized. Then you have grapevine is a necessary evil, because it is also related to informal organization. In every organization, that grapevine, when we talk about grapevine, we talk about that zone where an interaction takes place among the different members of organization. Informations are shared on the personal and organizational matters. So you have a lot of information constantly floating in that informal group and the informal zone. Smart managers and executives, instead of taking it negatively, very often they use it positively.
So it is a necessary evil. It is an evil because it leads to, from time to time, the grapevine, this zone of informal interaction, rumors, canards, information, misinformation campaign. Sometimes some people set vendettas against one another. You criticize, the criticism, the counter criticism, many things keep floating. It may be true, it may not be true. Point is clear. In every organization, you can see this kind of zone, that grapevine. Point clear. But it is a necessary evil. It is an evil, but it's necessary. Why? There has to be some zone where the people should talk freely. So what is there inside them? It should find expression. If an organization has only formal interaction, there are many things that will remain. There will be many things which may be crucial for the policy making in the organization, but that will remain suppressed under some kind of rules, regulation, strict discipline, etc. But the grapevine means that you get an opportunity to peep into those things, you get those information, which may be very raw. People give expression to what they feel and what they know without much inhibition. So very often you get those informations from the grapevine, on the basis of which you can diagnose the real problem which may be hidden behind the formal problem of the organization. Sometimes you get to know what would never have come in front of you in formal channel of communication. Informally, you come to know about many things that would never have come to you formally, and accordingly, you can diagnose the problem, you can anticipate the problems which are likely to arise, okay? You can prepare for the same, and sometimes you can nip the problem in bud. So this may appear as an evil, but this is a necessary evil. It is a necessary evil. It is necessary. So smart managers and executives, they never take this informal interaction or the grapevine, getting a point, negatively. That it appears that it may interfere with the efficiency of organization, it may interfere with the professionalism in the organization, exercise of authority. Lot many things are there. But you come to know many things from this grapevine you would never have come to know, had you gone only for the formal communication. Point clear? And this can be made use of very meaningfully for the betterment of organization. Point clear? बहुत सारे र्यूमर चल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है. समझ गए? ठीक है, हर समय सही नहीं होगा कि मिस्टर मेहरा आजकल ज़्यादा ही कॉफ़ी पी रहे हैं. बहुत सारे चल रहा है आजकल, वो लॉबी बढ़िया काम कर रही है, लग रहा है वहीं से कोई आने वाला है, ऊपर लीडर तो वही बनेगा. ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है. लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, फैक्ट्री में वर्कर्स क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि वहाँ पर ट्रेड यूनियन की क्या एक्टिविटी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें. अब वो इस ग्रुप का हिस्सा है, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, टॉप मैनेजर्स हैं, उनके ड्राइवर्स हैं, उनके एसोसिएट्स जो हैं अगल बगल में, सेक्रेटरी, पियोन वगैरह, वो सब उसका हिस्सा है. कई बार उस चैनल से वो ऐसी बातें जान लेते हैं जो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो कई तरह की कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे हो, कई बार एक दूसरे के खिलाफ जो कर रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं कि ये मैटर भी 2 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा, ऊपर जा चुका है. क्यों? क्योंकि इनका ड्राइवर भी उस ग्रेपवाइन का हिस्सा भी मिला हुआ है वो. लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा कि जिसको तुम अपना समझ रहे हो, वो जितने अच्छे से जानकारी तुम्हें दूसरों की दे रहा है, तो तुम्हारी जानकारी भी वो दूसरों को दे रहा है कि साहब को बता के आ गए ऐसा, अब वो ऐसा कुछ करेंगे, तुम देख लेना. तो ग्रेपवाइन जो है एक एविल है, लेकिन नेसेसरी एविल. ठीक है, उसके बाद तुम इसमें आ जाओ, हेल्दी हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड एजेंसीज. हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड एजेंसीज रिलेशनशिप थ्राइव्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, हेडक्वार्टर एंड फील्ड एजेंसीज, ये सब जानते हैं. कम्युनिकेशन इज द की. कम्युनिकेशन इज द की टू कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. So any organization, its headquarters and the field agencies, the place where policies are framed. Headquarter, policy decisions are taken, rules regulations are made, fundamental principles, doctrines are propounded. जैसा भी स्थिति है वैसे. ठीक है, तो you frame policies, rules, regulations, laws, and then field agencies are employed. Field agencies are involved for the implementation of the same. And we know very well that policy making and policy implementation, they are not mutually exclusive. They are two integrated components of, or they are the two components of one integrated scheme of things. So policy formulation and policy implementation. So headquarters and field organization, they need to work in proper, they need to work in cooperation with each other, and we need very good coordination. And this cooperation and coordination thrives heavily on communication. Communication is the process by which authority is exercised. Authorities exercise, orders and commands are issued. It is through the communication
that the officials sitting in the headquarters, it is through communication only that they get the necessary input and intelligence. Without this input and intelligence, policy making is not possible, decision making is not possible. Then through communication, orders and commands are issued, things are executed, you collect feedback to what extent policies have been implemented. You examine whether or not responsibilities are being discharged properly. You devise various means and mechanism for the enforcement of accountability. Communication is the key to the enforcement of accountability. You can talk to them, you can mail your the employees at the field agencies, getting a point, you collect feedback, you can talk to them over phone, then you can go for the personal visit. These are the different, there can be direct communication or there can be communication through phone, gadgets and all such things. Communication is communication. ठीक है, as long as the sender is successful in making receiver understand what he was willing to, what he was intended to convey and what he wanted receiver to understand, communication is complete. As long as this is done, communication is complete. प्रेषक जो है प्रेषित से जैसी अपेक्षा रखता था कि उसी इस बात का मतलब ऐसा समझ में आना चाहिए और वैसा ही उसे अगर समझ में आया तब कम्युनिकेशन कंप्लीट है. तो हेडक्वार्टर एंड फील्ड रिलेशनशिप, the coordination between the two or the efficiency with which policy making, policy implementations are taken care of, it depends heavily on communication. Because the lack of communication means that you fail to get the feedback. You fail to get the feedback, then you fail to apply correctives. When you fail to apply correctives, then this cyclical process will be inhibited, it will be disturbed. You see, one of the major problems of administration is lack of communication, and we cannot take communication lightly. Lack of communication or poor communication means poor level of cooperation and coordination. In the absence of communication, authority cannot be exercised. In the absence of communication, directions cannot be issued. Okay, you cannot examine, you cannot analyze to what extent your orders and commands have been executed. You cannot collect feedback, you cannot apply correctives. So therefore, this cyclical process cannot be run on sustained basis. Communication is the key. Point is clear? Those components of the organization which are beyond the network of communication, getting a point? It means they are not getting support from other subsystems and they won't be able to contribute for the successful functioning of the entire system. मतलब जहां भी कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा, ठीक है, तो वो कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो काफी हद तक रिडंडेंट हो जाएगा. वहां क्या चल रहा है तुम्हें पता ही नहीं होगा. इसलिए हेडक्वार्टर एंड फील्ड रिलेशनशिप, headquarter and field should not be taken as two mutually exclusive entities. They are the two interrelated components of one integrated scheme. At one place decisions are taken, other place it is executed. So those who are taking decisions and those who are implementing such decisions, they has to be very good communication. They has to be in touch with one another constantly, so that from the time to time reporting is possible. It's not like that you have just formulated policy. Making and implementation is not one time exercise. Once you formulate a policy, you issue directions for the implementation of the same, then you need to be alert and vigilant. You need to exercise supervision. From time to time, you get you have to review, to what extent things have been done. You cannot wait for months and after you collect data that things have been implemented. By the time you intervene, damage will have been done. So therefore, when you issue directions from time to time, every week or month as the case may be, you collect information. So enforcement of accountability through communication, उसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बहुत जल्दी से जल्दी तुम्हें पता चल जाए अगर कुछ डेविएशन अगर हो रहा है तो, ठीक है, तो तुम इंटरवेन कर सको. इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर धौंस जमाना या उनको डांट फटकार करना. अकाउंटेबिलिटी का जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि हमने तुमसे कहा कि समय समय पर रिपोर्ट करते रहो, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स की जा रही है कि भाई सैटरडे को या फिर मंडे को जब भी है वो टाइम पे खास टाइम है, उस पर सब लोग मेल करेंगे, सब बताएंगे पूरे वीक का काम क्या है, 15 डेज का काम क्या है. उसके पीछे मकसद केवल तुम्हें फोर्स करना नहीं है, मकसद उसके पीछे ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि राइट अंडर माई नोज माई सबऑर्डिनेट्स व्हाट दे आर डूइंग, आर दे फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, if they are deviating from the predetermined path, if that deviation is taking place और वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी की वजह से तुम जान पाओगे एंड यू कैन अप्लाई करेक्टिव्स कि तुमसे गलती हो रही है, तुरंत ये डैमेज भले हो गया, कोई बात आगे ये नहीं हो पाएगा, आप इसको चेंज करें, इस तरह से काम करें. पॉइंट क्लियर? सो कम्युनिकेशन होल्ड्स द की. हेडक्वार्टर और फील्ड रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एक बार कट करके देखो जरा, इसका इंपॉर्टेंस समझ जाओगे. नीचे फील्ड रिलेशनशिप पे क्या चल रहा है, हेडक्वार्टर को होश ही नहीं है, पता ही नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है तो पता ही नहीं है.
ऊपर जो डिसीजंस ले रहे हैं उन्होंने ढंग से कम्युनिकेट अगर नहीं किया, इसको केवल फिजिकल सेंस में ऐसे मत लो, मतलब एक दूसरे की बात को समझने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हेड क्वार्टर जो है वो अपने धुन में अपनी पॉलिसी बना रहा है, ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, फीडबैक कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है, वो पॉलिसी बना रहे हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बना दिए। अब उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है फील्ड एजेंसी को। फील्ड एजेंसी जब जाती है जमीनी स्तर पर काम करने के लिए तो पिटाई खाती है, गांव वाले से मार खाती है। कई बार इंप्लीमेंटेशन वाले बेचारे इसलिए झेल रहे होते हैं कि पॉलिसी गलत बना रखा है और हमें कह दिया इंप्लीमेंट करने के लिए, और कितनी बार बोल दिया कि साहब ऐसे मत किया करो, आप ये जो प्रोग्राम आपने बनाया, जो प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर दिक्कत है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं हो सकता। अब आप कभी जाएंगे कोई हेड क्वार्टर के लोगों को भी समय समय पे विजिट करना चाहिए, फील्ड पे जाके वहाँ देखना चाहिए उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उसके डायनामिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नहीं हमें बहुत अनुभव है, हम तो पहले फील्ड में बहुत काम कर चुके हैं, तुम कल के लड़के हमें सिखाओगे। सर आप जब काम करे तो हो गया सर, 15 साल हो गया, 15 साल में बहुत कुछ बदल गया है। नहीं समझ में आ रहा तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख लीजिए क्या अंतर आया है। 15 साल पहले आप क्या देख रहे थे, अभी क्या देख रहे हैं, बड़े शौक से बैठ के सबके साथ। बहुत कुछ बदल गया है, वैल्यू सिस्टम बदला, गाँव अब पहले ऐसा गाँव अब नहीं है। तो कभी कभी आ जाए करिए, हम लोग की दुर्दशा भी देख लीजिए थोड़ी। तो कभी कभी हेड क्वार्टर के लोग अगर रेगुलर आएंगे, विजिट करेंगे, तो वो डायनामिक्स को समझेंगे। और यहाँ के लोग जो है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो हम लोग हैं कि फील्ड में सब कर रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग भी इतना आसान नहीं है। कभी कभार इनको भी वहाँ बुलाइए हेड क्वार्टर पे, वहाँ भी आए, देखे, समझे, और जब कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर हुआ है तो उस जगह पे उनको भी थोड़ा एक बार अगर उनका भी एक्सपोजर अगर हो जाए तो वो अच्छी तरह समझ पाए कि जो पॉलिसी बनाई गई है उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, सोच क्या है, ठीक है। उनका रोल परसेप्शन क्लियर हो जाएगा कि ये पॉलिसी और हम ये चाह रहे हैं और आपसे एक्सपेक्टेड ये है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसका मतलब कि दोनों के बीच बहुत सुंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेरी बात समझे? कम्युनिकेशन इज द की टू कोऑपरेशन, and when cooperation is institutionalized it becomes coordination, and without coordination you cannot accomplish any goal, purpose and objective. And if you achieve it, even if you succeed in achieving, the cost will be very high, because proper coordination restricts the possibilities of friction, it avoids duplication of effort, you accomplish the goal, take it, with the minimum input of time, money, energy, if coordination is good. क्या हुआ, नहीं समझ में आया? ठीक है, आ जाओ उसके बाद मीडिया हैज बिकम मोर ऑफ अ सोसाइटल लेंस देन इंस्टीट्यूशनल लेंस एनालाइज, ठीक है, मोर ऑफ ए सोसाइटल लेंस देन इंस्टीट्यूशनल लेंस। ये मीडिया के रोल को लेकर के, मीडिया के बारे में एक कुछ खास पॉइंट्स हम तुम्हें लिखाए थे, उसमें से तुम्हें इलिस्ट्रेट करके कुछ पॉइंट निकालना था, उसमें से वो लिखना। हमने कहा था ना कि मीडिया का रोल क्या है। मीडिया इज प्लेइंग द रोल, मीडिया in contemporary times, print media, electronic media, more particularly electronic media, it is not merely concerned with reporting of events, reporting of news or something. It has gone much beyond that conventional role. Media plays the role of intermediary between government on the one hand, society on the other. Media plays the role of a think tank. Media is playing the role of reformer. ठीक है, they identify various issues of day-to-day concern. ठीक है, with this matter related to triple talaq or women empowerment or social justice. Are getting a point? News channels are not merely concerned with reporting of things. They raise important matters of societal importance. They facilitate debate and discussion. ठीक है, they are also playing the role of a think tank. Point here. They provide policy input to the government. So they are also playing a very important role in social reforms. One is clear. So media playing the role of intermediary. Media is playing the role of a think tank. ठीक है, मीडिया इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, मीडिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एजुकेटर. पॉइंट क्लियर? मीडिया वेरी ऑफन, मीडिया in a collaborative action with civil society, several NGOs, voluntary agencies, they are playing the role of, they are championing the cause of weaker underprivileged sections of society. So they raise very important issues. They provide, they collect the data, statistics or information. They share it with other non-government organizations, voluntary agencies, and collectively. We have seen many cases that something has been reported by media, then it has been taken up by civil society. Something has been reported by civil society, then media has taken this matter across the length and breadth of the country. They are the movers and shakers of public opinion. Point clear? So bring reforms, they take action, and various public interest litigations have been filed in the Supreme Court or High Court by the collaborative action of media and civil society. They sensitize the society, they raise the important matter, they provide the policy inputs to the government.
ठीक है, दे कीप एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, सो दे आर नॉट merely confined, they are not just confined to reporting of news, they have gone much beyond that. It is not just an institutional lens, a societal lens it has become. Point clear? It has become more of a societal lens than institutional lens. लेंस तुम समझते हो? हाँ, किस लिए लेंस किस लिए यूज करते हैं? हाँ, लेंस के थ्रू देखते हैं। अब ये हम दोहरी बताए बस, लेंस है अलग तरीके का लेंस है, एक लेंस खोल के दूसरा लेंस लगा लिए, सोसाइटल लेंस इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेंस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया केवल सोसाइटी, मोर ऑफ ए सोसाइटल लेंस दैन इंस्टीट्यूशनल लेंस। पॉइंट क्लियर? एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसके बहुत ही डिफाइंड गोल्स, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके दायरे के अंदर वो काम करता है, और एक इंस्टीट्यूशन उसकी नज़र से ही चीज़ों को देख रहा है। मेरी बात समझे? कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है, इंस्टीट्यूशन जैसी वर्ड तुम यूज की, इंस्टीट्यूशन मतलब उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री हुई, इंस्टीट्यूशन की एक डिफाइंड बाउंड्री होगी, वो एक सिस्टम है। सिस्टम तभी होगा जब कोई बाउंड्री होगी। ठीक है, उसके कुछ डिफाइंड गोल्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव होंगे, उस पर्पस और ऑब्जेक्टिव के फर्दरेंस के लिए ही उसके कुछ खास एक्शंस होंगे, और सीक्वेंस में वो एक्शन, वो एक्टिविटीज वो कैरी आउट करता है। इंस्टीट्यूशनल लेंस जो होगा बहुत ही स्पेसिफिक और डेफिनेट होगा। ठीक है, सोसाइटल लेंस समझ में आया? तो वो उसका दायरा बहुत ही ब्रॉड होगा। सोसाइटल लेंस मतलब वो केवल एक इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा है, उसके लेंस का दायरा बहुत ही बड़ा है, अब वो सोसाइटी के अंदर उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। समझ में आया? अब थोड़ा तुम लोग इसमें एग्जामिन करना और देखना, बताना हमें। अच्छा, ये देखो, इसमें ये तुम्हारे मोटिवेशन का इसका मैकग्रेगर्स के सिद्धांत एक्स और वाई। मैकग्रेगर्स थियरी ऑफ एक्स एंड थियरी वाई प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू ह्यूमन मोटिवेशन एट वर्क प्लेस डिफरेंटली। एग्जामिन डिटेल। ठीक है, मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू ह्यूमन मोटिवेशन एट वर्क प्लेस डिफरेंटली। ठीक है, हम लोग मोटिवेशन डिस्कस किए थे कि there are different perspectives on motivation, different theories on motivation, but one thing which is common is that motivation has to do, motivation is something, motivation is a behavioral phenomena which is concerned with the need of a person. There is a direct link between motivation and need. It is the strength of need that actually generates that inner drive and force. That inner drive and force propel you towards some kind of action. ठीक है, what kind of action? Goal oriented action, and that action when leads to accomplishment of goals and objectives, then you draw satisfaction. Need is fulfilled, then even before the completion of the need, and the need comes into existence, and the process goes on and on. So motivation is not so much concerned with your destination. Motivation is something which is reflected in the intensity of your effort and your commitment. It is something which is related to your action. Motivation is manifested by the intensity of your effort, intensity of your action towards the accomplishment of those things which will lead to satisfaction of your needs. If your needs are very weak, if you don't have strong needs, जीने की चाहत, बहुत सारी चाहत तुम्हारी, मतलब किसी चीज़ की कोई चाहत नहीं है, कोई नीड अगर तुम्हारी नहीं है, तो वो इनर ड्राइव फोर्स पैदा नहीं कर पाएगी, और फिर तुम्हारा मोटिवेशन लेवल लो हो जाएगा। मोटिवेशन हैज़ टू डू विद द स्ट्रेंथ ऑफ दैट नीड। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या लोग डिमोटिवेशन में चले जाते हैं। ठीक है, उसका मूल कारण क्या है? किसी भी कारण से लगातार कंसिस्टेंट फेलियर हो, समझ में आ रहा है, किसी तरह का इंटरनल एक्सटर्नल कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से वो पर्सन एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसकी जीने की चाहत अब बहुत ज़्यादा नहीं रही। ऐसा लगता है लाइफ में कोई गोल, पर्पस, ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज़ नहीं है, तो उसके अंदर वो उत्साह नहीं है, वो नीड अगर नहीं है, तो दैट विल नॉट जनरेट एन इनर ड्राइव एंड फोर्स। वो फोर्स नहीं आएगा तो वो एक्शन की तरफ नहीं जाएगा। समझ में? डिप्रेशन का जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैक ऑफ एक्शन। हम लोग इकोनॉमी पे जो अप्लाई करते हैं वो इंसान पे अप्लाई कर दो। डिप्रेशन और रिसेशन refers to what kind of state of affairs in economy? Very low demand and very low supply for goods and services, very low economic activity. Demand supply तो बात की चीज़ है। Depression in economy refers to situation of very low economic activities. जिसको बेचना है वो बेचने में घबरा रहे हैं, जिनको खरीदना है वो भी खरीदना नहीं चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेरी लो, और एक तरह का वो साइकिल क्रिएट हो गया, विशियस साइकिल, म्यूचुअली इन्फोर्सिंग। लो डिमांड लो सप्लाई, लो सप्लाई लो डिमांड चल रहा है इसी के अंदर में। ये समझ में आ रहा है? मतलब सब लोग एक तरह की निराशावादी सोच ऐसे चल रही है। ठीक, उसको फिर अगर तुम ब्रेक कर दोगे, न्यूटन्स लॉ में फंस जाता है वो, सिर्फ बाहर से कोई फोर्स अगर आए तो उसे निकाल ले। तो वैसे ही है, मोटिवेशन में डिस्कस किए थे,
अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे. तो मोटिवेशन, इसमें बहुत सारी थ्योरी थी, उसमें से थियरी एक्स एंड थियरी वाई. तो पहले हम लोग डिस्कस किए थे मोटिवेशन, फिर उसमें अलग अलग थियरी डिस्कस किए थे. हर्जबर्ग की थियरी थी, मॉस्लो की थियरी थी, मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई, ये था ना. और एक और इसमें प्रिंसिपल था, हम लोग डिस्कस किए थे कि मोटिवेशन में डिफरेंट पर्सन्स आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, डिफरेंट पर्सन्स आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड द सेम पर्सन इज मोटिवेटेड बाय डिफरेंट इंसेंटिव्स during different stages of his life, his career. Point is clear? So there are different theories. These are the basic principles. That's why we have scholars propounding so many theories have been propounded on motivation. We can look at motivation from different ways and different means, but all of them do agree. Why? It is something which is very much complex, because human beings are dynamic being. The life never remains static. Their likes, dislikes, preferences, their priorities keep changing. So therefore, there cannot be one set of incentives to motivate all. A set of incentives can motivate you, but that set of incentives may not motivate others, and the same set of incentives cannot motivate you in different stages of life. ये हम क्वेश्चन पे आई नहीं, हम तो थोड़ा सा तुम्हें याद दिला रहे थे. So McGregor's theory X and theory Y. McGregor's theory X and theory Y is basically theory X and theory Y relates to the two transparently different assumptions regarding the nature of human being. ठीक है, so broadly there is a very, very broad categorization that the members in the organization can be categorized into two, those falling under theory X and falling under theory Y. So what are the assumptions? Assumptions under theory X is this, that human beings are basically economic being. Human beings are economic beings. They are actuated by economic interest, economic incentives. They don't want to take any responsibilities. Point is clear. They don't want to take responsibilities, and then they are, as I said, that they are actuated by economic needs and economic necessity. Given an opportunity, to assume new responsibilities, and to reflect, creativity. So they generally go away from that. Instead, they don't want to take new responsibilities, and they even if you give them opportunity to express creativity or dynamism, something, they don't take it very much positively. And very often they form some kind of informal organization against the management, and that too on the negative lines. So theory X, people are generally lazy and lethargic. You need to make them work. So that's why you need very strong structure, method, technique, process, rules, regulations, so as to ensure that behavioral infirmities do not find expression. So theory X assumption is this, that human beings are economic beings, and human beings are actuated by economic interest or economic incentives. They don't want to take new responsibilities, and most of them lack that creativity or dynamism. Point clear? They just remain confined to their work, and they want incentive against that. They do not care much about the organization's purpose and objective. They have limited wants, desires, more concerned with economic incentives. They revolve around that, and they have a tendency to form informal organization generally on negative lines against the management. Point is clear? And that's why the assumption is this, and that's why they can be motivated only by economic incentives. You need a very strong, powerful leadership. You need to develop a good structure so that you don't allow that infirmities to find expression in human behavior. And on the other hand, you have theory Y, just opposite to theory X. Theory Y assumption is this, that human beings are not only economic beings, they are social beings as well. And given the opportunity, they would like to discharge responsibilities in a much better way. They would like to assume new responsibilities. Or if you provide them conducive environment, they can contribute very well for the accomplishment of goal, purpose and objective of organization, because they have that creativity and dynamism. They just need that kind of expression. And then if you train them well, if you create a good social environment, they will be largely self-governed. There would not be so much of necessity of imposing things from above. So they are not only economic being, they are social being. They can be motivated not only by economic incentives, they can be motivated by social incentives as well, and they tend to form a society of their own. They long not only for the individual interest, but they are also concerned with their larger collective and societal interest. Point is clear? They love to share their emotional state of being with one another. They form a society of their own. Point clear?
So they develop that kind of social cohesiveness. If managed well, that this can be used for the betterment of organization. So briefly, वो डिटेल में तुम पढ़ लेना, theory X and theory Y. So members in the organization can be broadly categorized into theory X and theory Y. Point clear? And accordingly, executives they need to design the incentives to motivate the people. Those who are falling under theory X, under this assumption, are getting a point? Those who fall under theory X, they cannot be motivated by opportunity for, developing that comradeship or then a social, the relatedness or social relationship or something. Those falling under theory X, they are motivated only by economic incentives. They are required to be controlled and regulated. They need this kind of environment. And those who are falling under theory Y, they cannot be motivated only by economic incentives. You need to provide them opportunity to pursue their social needs. You need to create an opportunity. You need to create conducive environment so that they could pursue their personal growth. They also look for better career prospects. They are not just looking for what they're getting from the organization. They also think about what they can contribute. They constantly work on their personal growth. So that's why that kind of environment is required. So theory X वाले जो है उनको तुम लाख समझाओ कि तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें ऑर्गेनाइजेशन में सीख रहे हो, तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, सीखने के लिए बहुत सारे पढ़, तो बोलेंगे सब बात ठीक है, सैलरी बढ़ाई नहीं आप, पैसा समझ आया, पैसा। वो अलग अलग इस तरह से थियरी एक्स और थियरी वाई के लोग अलग अलग हैं, इसलिए उनके मोटिवेशन के लिए तुम्हें डिजाइन करना पड़ेगा। एक और पॉइंट, द वन हु फॉल्स अंडर थियरी एक्स टुडे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही विल कंटिन्यू थ्रू आउट हिज करियर अंडर थियरी एक्स। ये तो एक एजम्पशन है रिगार्डिंग नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बट ग्रेजुअली इन द कोर्स ऑफ टाइम चेंजेस डू टेक प्लेस। सो दोज हु कन्फर्म टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ थियरी एक्स, ग्रेजुअली they come out of that stage, ठीक है, and as part of evolution they start reflecting behavior for which they will come under theory Y। तो जो आज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के पीछे जा रहे हैं, जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो धीरे धीरे इवॉल्व करके काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे, फिर उनके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स भी अलग हो जाएंगे, कौन सी बात इनको मोटिवेट करती है उसमें भी काफ़ी बदलाव हो जाएगा। तो वो थियरी एक्स से एक बदलाव हो जाए, थियरी एक्स से वो मूव करके चले जाएंगे थियरी वाई के अंदर। पॉइंट क्लियर है? मतलब थियरी एक्स और थियरी वाई का एजम्पशन, बहुत तरह की उनके नीड्स क्या क्या होंगे, किस तरह की लीडरशिप उन पे काम करेगी, ठीक है, उनका कम्युनिकेशन जो है वो भी वैसे ही होगा थियरी एक्स एंड थियरी वाई के अंदर। तो बहुत सही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थियरी एक्स एंड थियरी वाई, ठीक है। अब देखो, मैकग्रेगर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू ह्यूमन मोटिवेशन एट वर्क प्लेस डिफरेंटली, ठीक है। सो थियरी एक्स एंड थियरी वाई, इफ यू नो the assumptions made under theory X and theory Y, that gives an opportunity to understand the case of motivation in the organization, and you come to know how members differ from one another, and that's why they can be motivated by different set of incentives. Point clear? So it does not mean that entire organization, all the members of the organization can be bifurcated into theory X and theory Y. Theory X and theory Y are the two extreme points. So if you know the two extreme points, then you can easily examine the cases in between the two. मेरी बात समझ गए? Research studies have suggested that most of the persons cannot be categorized strictly under theory X or theory Y. Contemporary research suggests that most of the persons do fall between the two. नहीं समझे? केवल theory X, ये तो दो एक्सट्रीम इसलिए बताया जाता है कि तुम उन केसेस को अच्छी तरह समझ सको जो दोनों के बीच में है। अगर तुमने दो एक्सट्रीम को समझ लिया, theory X and theory Y, then you can easily examine the cases between the two. जैसे तुमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझ लिया, मेरिट्स और डिमेरिट्स, देन यू कैन इजीली एग्जामिन द केस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वुड फॉल बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड decentralization. So whenever we are in any theory, if we are made to understand the two extreme things, it means we are dealing with the two extreme things. It does not mean that every organization actually conform to one of the two poles. It means this, that if you know the two extremes, then you can examine the things between the two, because most of the organizations or the members of the organization, they reflect the interplay, or getting a point? Interplay of the attributes of the two extremes. इसलिए अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होंगे, अधिकतर लोग होंगे, उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव भी चाहिए होता है और सोशल इंसेंटिव भी चाहिए होता है। समझ गए बात को? ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो केवल थियरी एक्स के अंदर आएंगे, ऐसा नहीं है। शुरुआत में कुछ समय के लिए हो सकता है, बहुत जल्दी तुम समझ जाते हो कि तुम्हें जीने के लिए दोनों चीज़ें ही चाहिए, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, पैसा भी चाहिए, और सोशल इंसेंटिव्स। तुम वाइस प्रेसिडेंट ही बन जाओगे ना, तो भी ऐसा थोड़ी है कि इकोनॉमिक इंसेंटिव छोड़ दोगे, ठीक है। सैलरी 2-3 महीने रोक के देखो जरा क्या होता है, ठीक है। वो सब जो चल रहा है चलने दो, उनकी प्रायोरिटीज़ अब थोड़ी अलग हो गई है,
फोकस इकोनॉमिक्स पे थोड़ा कम है, किसी और चीज़ पे फोकस ज़्यादा है। मोटिवेशन की बहुत सारी थेरीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीनियर लेवल पे जब लोग आ जाते हैं, हायर लेवल पे जब आ जाते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। ऐसा नहीं कि बेसिक नीड्स खत्म हो जाते हैं।